lecture number 7. Okay, we will continue with the image interpretation and digital image processing, unit number 2, lecture number 7. Preprocessing. What do you understand by image rectification and image restoration? Initially, in a row from a digital image may obtain flaws of or deficiencies. The correction of the deficiencies and the removal of the flaws present in the data is called the processing of an image. That means correction बहुत सारे होते हैं image में, that is called deficiency, उसको हटाना होता है, that is called pre-processing. Okay, that means removal of the flaws present in the data is called pre-processing of an image. In order to correct the image data, internal and external errors may be determined. इमेज को करेक्ट करने के लिए आपको डेटा में इंटरनल और एक्सटर्नल एरर फाइंड आउट करना पड़ता है. इंटरनल एरर्स आर ड्यू टू द सेंसर इटसेल्फ. इंटरनल एरर किस वजह से आता है? दैट इज कॉल्ड सेंसर इटसेल्फ. एंड दिस एरर्स आर सिस्टमैटिक and constant in nature and can be known from the pre-launched or in-flight calibration measurements. Then external error क्या होता है? Which are unsystematic, that means random in nature, are due to the turbulation of the platform and modulation of the scene characteristics. Okay, these errors, pre-turbulation of the platform and modulation of the scene characteristics. These errors can be determined by relating known ground points to their corresponding points in the image. That means जो ग्राउंड पॉइंट वगैरह होना चाहिए, प्लेटफॉर्म की वजह से भी ये होता है. ओके, प्लेटफॉर्म जहाँ पे भी आपने रखा है, जिस पे भी आपने सेंसर रखा है, उसके हिसाब से जो भी इमेज रहती है, ओके, उसमें भी करेक्शन होता है. दिस एरर इज कॉल्ड सिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक एरर. ओके, और relating are due to the pre-turbulation of the platform and the modulation of the scene characteristics. जो भी scene characteristics है उसमें modulation होता है और pre-turbulation of the platform. Okay, उसकी वजह से जो error आता है, that is called unsystematic or external error. These errors can be determined by relating known ground points to their corresponding points in the image. जो भी आपके पास इमेज में पॉइंट्स है उसको कोरिलेट किसके साथ करना पड़ता है? जो भी इमेज में पॉइंट्स है, ओके, नोन ग्राउंड पॉइंट्स जो भी है उसको इमेज में जो भी पॉइंट है उसके साथ कोरिलेट करना पड़ता है. तो ये आपको एरर पता चलेगा कि क्या एरर है. फॉर एग्जांपल, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट से फाइंड आउट किया, दैट इज द RL ऑफ दिस. ओके, तो RL ऑफ दिस लेवल इज दिस. ओके, तो और उसका आपके पास मैप में कोई लेवल हो तो वो आप कंफर्म करो, सर्वे करके कंफर्म करो, और दूसरा मैप में जो भी डायरेक्टली आपको मिलता है वो कंफर्म करो. उसके से एरर पता चलेगा कि क्या है. Okay, these operations aim to correct distorted or degraded image data to create a faithful representation of the original scene. Typical pre-processing operation involves radiometric correction and geometric. प्री-टर्बिडेशन का मतलब क्या है कि प्लेटफॉर्म डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से भी एरर आता है. देन कोई भी सीन है या कोई भी इमेज है उसमें आप कोई भी मॉड्यूलेशन करते हो तो उसकी वजह से भी एरर आता है. ओके, दिस ऑपरेशन एम टू करेक्ट द डिस्टॉर्टेड और डिग्रेडेड इमेज डेटा टू सीन, create a faithful representation of the original scene. Typical pre-processing operations involve the radiometric correction and geometric correction. Radiometric correction. The radiometric correction may be due to the variation in the scene illumination, variation in the viewing geometry, sensor noise and responses. So variation in the illumination and viewing geometry between the images can be corrected by modeling the geometric relationships and distances between the area of the Earth's surface image, the sun and the sensor. Noise in the image may be due to the irregularities or errors that occur in the sensor response and data recording and transmission.
Common forms of the noise include the systematic tripling or banding and dropping lines. Both these effects should be corrected before further enhancement or classification is performed. That means variation किसकी वजह से आता है? तो variation in the elimination and viewing the geometry between the images can be corrected by modeling the geometric relationships and distance between the जो भी मॉडलिंग करते हैं जियोमेट्रिक मॉडलिंग करते हैं उसकी वजह से वो करेक्ट कर सकते हैं, उसका यूज करके करेक्ट कर सकते हैं. एंड डिस्टेंसेस बिटवीन द एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, जो भी अर्थ सरफेस का एरिया है जो इमेज करते हैं वो, एंड द सन एंड द सेंसर. Noise in an image may be irregulated or error that occur in the sensor response and data recording and transmission. Common forms of noise include the systematic tripling and banding and dropping lines. Both of these effects should be corrected before further enhancement and classification is performed. Any sensor which observes the Earth's surface will record a mixture of two parts of brightness. One part of brightness is due to the reflected energy of the Earth's surface, while the other part is due to the scattered energy sensor, and hence is the error in the image. This effect is commonly known as atmospheric effect. Atmospheric degradation can be corrected by physical modeling, histogram of the dataset, and regression method. Okay, the sensor which observes the Earth surface will record the mixture of two parts of brightness. One part of brightness is due to the reflected energy. That means जो भी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है उसकी वजह से जो भी ब्राइटनेस आती है, ओके, तो उसकी वजह से एक इमेज बनती है. ओके, टू पार्ट्स ऑफ ब्राइटनेस, दो पार्ट्स में ब्राइटनेस डिवाइड होती है. वन पार्ट में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी की वजह से जो भी रिफ्लेक्टेड एनर्जी है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो उसकी वजह से ब्राइटनेस मिलती है. देन अदर जो पार्ट है इज ड्यू टू द स्कैटर्ड एनर्जी सेंसर. दैट मीन्स स्कैटर्ड एनर्जी सेंसर है उसकी वजह से भी एक ब्राइटनेस मिलती है. ओके, हैंस इज द error in the image. This effect is commonly known as the atmospheric effect. Atmospheric degradation can be corrected by physical modeling, histogram of the dataset, regression method. Okay, in the regression method, a visible band is plotted against an infrared band, and a best fit straight line is computed using the standard regression method. The offset A on the x-axis, as known as in figure 2.5, represents the estimate of the atmospheric correction to be applied for that particular band. Geometric correction कैसे आता है? All the remote sensing images are inherently subject to geometric distortion. This distortion may be due to the several factors such as perspective of the sensor optics, then the motion of the scanning system, motion of the platform altitude and velocity, the terrain relief, then the curvature and rotation of the earth. So geometric distortion तो इसमें internal systematic आवश्य तो and external non-systematic. The internal systematic में क्या आएगा? Scan skew, mirror scan velocity, platform velocity, earth motion, panoramic distortion, perspective, and external में क्या आएगा? Altitude और attitude. Scan skew. It is caused by the forward motion of the platform during the time required for each mirror sweep. Okay, and the ground sweep is not normal to the ground track but is slightly skewed, producing the cross scan geometric distortion, mirror scan velocity. तो स्कैन स्क्यू का मतलब क्या है? जब स्कैनिंग होता है तो एक एंगल पे रखना होता है, बट क्या होता है, जो भी ग्राउंड स्वेथ इज नॉट नॉर्मल टू द ग्राउंड ट्रैक. ग्राउंड स्वेथ है वो इट इज नॉट नॉर्मल टू द ग्राउंड ट्रैक बट इट इज
स्लाइटली स्क्यू और स्लाइटली एंगल पे होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन होता है. ओके, जो भी स्कैनिंग होता है उसमें. देन माइनर स्कैन वेलोसिटी. द एमएस एंड माइनर स्कैनिंग रेट इज नॉट कांस्टेंट अक्रॉस अ गिवन स्केल. ओके, producing a long scan geometric distortion. Then platform velocity. If the speed of the platform changes, the ground track covered by the successive mirror scans changes, producing along the track scale distortion. Okay. Then earth rotation. The earth rotates as the MSS sensor scans the terrain. This results in a shift of the ground swath being scanned, causing along the scan distortion. अर्थ रोटेशन की वजह से भी क्या होता है, डिस्टॉर्शन होता है, स्कैन डिस्टॉर्शन होता है. एटीट्यूड. इफ द एमएसएस प्लेटफॉर्म डिपार्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल एटीट्यूड, changes in the scale occur. Attitude, that means height. Okay, attitude. Then altitude. One of the sensor system axis usually maintain normal to the earth surface and introduce the geometric distortion. Platform velocity. If the speed of the platform changes, the ground track covered by successive mirror scans changes. That means speed of platform changes. प्लेटफॉर्म की स्पीड चेंज होती है, उसकी वजह से ग्राउंड ट्रैक कवर्ड बाय द सक्सेसिव मिरर स्कैन चेंजेस, प्रोड्यूसिंग अलोंग ट्रैक स्केल डिस्टॉर्शन. ओके, तो उसकी वजह से जो भी प्लेटफॉर्म है उसकी चेंजेस की वजह से जो भी हमें ग्राउंड का फोटोग्राफ खींचना है या इमेज खींचनी है वो नहीं हो सकता है. ओके, उसमें चेंजेस आता है. दैट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म वेलोसिटी. Then earth rotation. The earth rotates as the MSS sensor scans the terrain. This results in the shift of the ground swath being scanned and causing along scan distortion. Okay. Then attitude. If the MSS platform depart from its normal attitude, changes in the scale error. Then altitude. One of the sensor system axis usually maintain normal to the earth surface and introduces the geometric distortion. Okay. जब भी सेंसर सिस्टम की एक्सिस जो भी है वो नॉर्मल नहीं रहती है. ओके, वन ऑफ द सेंसर सिस्टम एक्सिस यूजुअली मेंटेन नॉर्मल टू द अर्थ सरफेस एंड introduces the geometric distortion. Okay, that means attitude or altitude. Okay, तो attitude में क्या है, if the MSS platform depart from its normal attitude. ओके, तो जो भी नॉर्मल एटीट्यूड में चेंज होता है, दैट मीन्स हाइट में चेंज होता है, उसकी वजह से स्केल में एरर आता है. जो भी चेंजेस इन द स्केल में चेंज होता है उसकी वजह से एरर आएगा. देन एल्टीट्यूड, दैट मीन्स वन ऑफ द सेंसर सिस्टम एक्सिस यूजुअली मेंटेन नॉर्मल टू द अर्थ सरफेस एंड इंट्रोड्यूसेस द ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन. ओके, नेक्स्ट. This one is called radial distortion, tangential distortion, then scale error. Okay, then projection distortion, then skew, then along track scale error, then stepwise distortion, line scale error. That is called internal distortion. Then external distortion में क्या आएगा, shift error, scale error, then vertical and horizontal error, then skew of scan line, projection distortion, then distortion due to the earth curvature and terrain relief displacement. Okay, that is called external distortion. Image enhancement. Image enhancement can be defined as the conversion of the image quality to better and more understandable level of the image interpretation. Although radiometric correction for the illumination, atmospheric influence and the sensor characteristics may be done prior to distribution of the data to the
user. The image may still not be optimized for the visual interpretation, and the image enhancement techniques are applied either to single band images or separately to the individual bands of a multi band image set. Okay, तो इमेज एनहेंसमेंट का मतलब क्या है कि उसको बेटर क्वालिटी में हम उसको कन्वर्ट करें, जिसकी वजह से उसमें जो भी इमेजेस है उसको हम बेटरली इंटरप्रेट कर सकें. द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इमेज एनहेंसमेंट आर to make the image for easier interpretation, to remove the distortion from the image for the better visualization. Distortion, that means what? Distortion का मतलब ये है कि जब भी हम फोटोग्राफ ऊपर से खींचते हैं तो उसका सेल जो भी एक्चुअल पोजीशन है या एक्चुअल साइज है वो ही आएगा. बट आप कोई एंगल पे कोई भी फोटोग्राफ खींचते हो तभी क्या होगा, तो एंगल पे फोटोग्राफ खींचने से क्या होगा, उसमें जो भी उसका साइज है उसमें चेंजेस आएगा. दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन. ओके, तो वो डिस्टॉर्शन को रिमूव करना है फ्रॉम इमेज फॉर द बेटर विजुअलाइजेशन. कोई भी इमेज है उसको बेटर विजुअलाइज करना है तो वो भी हम इमेज एनहेंसमेंट से कर सकते हैं. देन टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम डेटा, दैट मीन्स मैक्सिमम डेटा हमें पिकअप करना है, लेना है, तो उसके लिए भी इमेज एनहेंसमेंट जरूरी है. There are numerous procedures that can be performed. There are numerous procedures that can be performed to enhance an image. However, they can be achieved using two major functions: point operation, that is called radiometric enhancement, and local operation, that is called spatial enhancement. Point operations change the value of each individual pixel independent of all other pixels, while local operations change the value of individual pixel in the content of the values of the neighboring pixel. Okay, तो individual pixel independent of point operation में क्या है, change the value of individual pixel independent of other pixel, while the local operation change the value of individual pixel in context of the value of the neighboring pixel. Then next one is image reduction. Nowadays, several computer display systems are unable to display a full image at the normal image pixel scale higher than 3000 rows and 3000 columns, and it should be borne in mind that our display monitor generally consists of 1024 to 768 screen resolution. Unable to view the entire image may pose a problem in locality the exact coordinate of the study area. Under such circumstances, image reduction allows the analyst to view a subset of the image at one time on the screen by reducing the original image data set down to a smaller data set. Then image magnification. इमेज मैग्निफिकेशन, दैट मीन्स जो इमेज है, डिजिटल इमेज है, उसको मैग्नीफाई करना. ओके, डिजिटल इमेज मैग्निफिकेशन इज ऑफन रिफर्ड टू एज जूमिंग. दिस टेक्निक इज मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड ऑफ टू पर्पसेस. ओके, टू improve the scale of the image for the enhanced image interpretation and to match the scale of the another image. Okay, just now the column deletion is the simplest form of image reduction. Row and column replacement represents the image magnification. Then modify an image by an integer factor a squared. Each pixel in the original image is usually replaced by n block of the pixel. An example of the logic of 2x magnification is shown in the figure. Then contrast enhancement. Contrast enhancement का मतलब क्या है? The range of the brightness values presented on an image is referred to as contrast. Contrast enhancement, also referred to as a radiometric enhancement, is a process to make the image features stand out more clearly by making optimal use of the colors available on the display or output.
रिवाइज, दैट मीन्स कलर वगैरह ऐसे चेंज करना चाहिए जिसकी वजह से वो इमेज क्लियरली दिखे, अच्छे से दिखे. ओके. कॉन्ट्रास्ट मैनिपुलेशन इन्वॉल्व चेंजेस इन द रेंज ऑफ वैल्यूज इन एन इमेज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट. For instance, an image might have a range of brightness values between 40 to 60. When this is stretched to a range of 0 to 255 and the differences between the features are enhanced. Linear and non-linear digital techniques are two widely practiced methods of increasing the contrast of an image. An image histogram is a graphical representation of the brightness values that compresses an image for a single band of data. The horizontal axis of the histogram is the range of all possible brightness values. The vertical axis is number of the pixels associated with each brightness value. The histogram can convey whether or not our image has been properly exposed, whether the lighting is harsh or flat, and what adjustments work best. Histogram can also describe the amount of contrast. Contrast is a measure of the difference in brightness between light and dark areas in the scene. Broad histogram reflects a scene with the significant contrast, whereas the narrow histogram reflects the least contrast and may appear flat or dull. Okay. The next one is linear contrast enhancement. Linear contrast enhancement linearly expands the original digital values of the remotely sensed data in new distribution. This type of the enhancement are best applied to remotely sensed images with which the growth or near Gis histogram implying that all the brightness values fall within a narrow range of the histogram and only one mode is apparent. There are four main methods of the linear contrast enhancement. First one is minimum maximum stage. Second one is saturation stage. Third one is average and standard deviation stage, and last one is piecewise stage. Okay, आज तक इतना है. Thank you.